Okay, welcome back. We are discussing about fluid and acid base imbalance, electrolyte imbalance. हमने हाइपोन्यूट्रीमिया, हाइपरन्यूट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया डिस्कस कर लिया है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स हाइपरकैलेमिया, जिसका नॉर्मल लेवल हमने 3.5 से लेकर 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर डिस्कस किया था. पोटेशियम का लेवल नॉर्मल इतना होता है. जब 3.5 से कम होएगा तो उस कंडीशन को हमने हाइपोकैलेमिया कहा है, और जब मोर देन 5 इक्विवेलेंट पर लीटर होएगा तो उस कंडीशन को हमने हाइपर कलीनिया कहना है. राइट. ओके. लेस कॉमन देन हाइपोक्लीनिया. हाइपोक्लीनिया मोस्टली अकर हो जाता है, लेकिन हाइपरक्लीनिया लेस कॉमन अनटिल अनलेस कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल हो चुके हों. कास्ट बाई अल्टर्ड किडनी फंक्शन. डेफिनेटली किडनी से इलिमिनेट हो रहा होता है, एल्डोस्टोन को इलिमिनेट करवा रहा होता है. अगर किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है, या एल्डोस्टोन की सिक्रीशन नहीं हो रही, तो अल्टीमेटली पोटेशियम इलिमिनेट नहीं होएगा एंड दैट विल लीड टू हाइपरक्लीनिया. इंस्टेड ऑफ दैट इंक्रीज इनटेक अगर ज़्यादा कर लिया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अगर पोटेशियम ज़्यादा आ गया है, मेडिकेशन लाइक पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक्स हैं, दैट विल डेफिनेटली लीड टू सेल डेथ एंड ट्रॉमा एज वेल. Okay. What do you see? Irritability, presthesia, मसल वीकनेस होएगी, स्पेशली लेग्स, ईसीजी चेंजेस आएंगी, टेंटेटिव वेव आना शुरू हो जाएगी, इरेगुलर पल्स होएगी, हाइपोटेंशन होएगी, nausea, abdominal cramping और diarrhea will be seen in that patients. इमरजेंसी में क्या कर सकते हैं? अपने 10% कैल्शियम ग्लूकोनोड को लेना है फॉर कार्डिक एफर्ट्स, सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर एसिडोसिस लेनी है. माइल्ड अगर है तो लूप डायूरेटिक्स दें लाइक लॉसिक्स वगैरह, और डाइटरी रिस्ट्रिक्शन कर दें सोडियम की. और मॉडरेट है तो ईजोलेट दें. अब नॉर्मल कंसंट्रेशन अब अगर पोटेशियम आयंस हो गए हैं तो उसकी ये कंडीशन हो सकती है, लाइक हाइपर में क्या हो सकती हैं, हाइपो में क्या हो सकती हैं, ये आप स्लाइड्स को देखें. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस. शुक्रिया जी. अच्छा.
ओके, डिफरेंशिएशन की तरफ आते हैं। मेजर काजेस क्या क्या हो सकती हैं हाइपरक्लीमिया की? ओके, movement of potassium from intercellular to extracellular fluid resulting from cell coma, burn, or crushing injuries and alteration in the plasma membrane permeability, like acidosis हो सकता है, insulin deficiency हो सकती है, and cell hypoxia हो सकता है। इसके अलावा decrease renal excretion of sodium from decreased secretion of aldosterone in the person with Addison disease। अगर एडिसन डिजीज है तो अल्टीमेटली एल्डोस्टेरोन की secretion नहीं होगी, एल्डोस्टेरोन की secretion नहीं होगी तो पोटेशियम किडनी से eliminate नहीं होगा। And symptoms are included as mild hyperkalemia caused mainly by patient partial depolarization of plasma membrane, increased neuromuscular irritability, restlessness होगी, intestinal cramping and diarrhea might be suspected। Instead of that, electrocardiogram alterations including rapid repolarization with narrowing and taller T-waves and shorter QT intervals. If the severe hyperkalemia exists caused mainly by partial depolarization of plasma membrane, severe enough to hamper action potential connections as well. Muscle weakness, loss of muscle tone, and paralysis may occur. Instead of that, changes by reduced rate of action potential conditions like depressed ST segment, prolonged PR intervals, and widened QRS complex. Arrhythmias and cardiac arrest may also occur. If we talk about hypokalemia, like glycolysis, potassium shift into the cell in exchange for heterogeneine insulin administration that promotes cellular uptake of potassium. Reduce potassium intake, especially with anorexia nervosa and alcoholism, increased renal losses, excessive aldosterone secretion, improper use of diuretics, or kidney disease that results in reduced ability to reabsorb sodium, and symptoms are mainly due to hyperpolarization of membrane, decreased neuromuscular excitability, skeletal muscle weakness, decreased tone in the smooth muscles and cardiac muscles, delayed ventricular repolarization, bradycardia, and atrioventricular block may occur. Okay. Next, magnesium helps produce ATP, role in protein synthesis and carbohydrate metabolism. Helps cardiovascular system function like vasodilation, regulates muscle contraction. Hypomagnesemia, serum magnesium level less than 1.5 milliequivalent per liter, caused by poor dietary intake, poor GIT absorption, and excessive GIT losses or urinary losses. High risk clients
like the person who is chronic alcoholism, malabsorption, GIT or urinary system disorders, sepsis, burns, wounds needing debridement. These are on the risks. What do you see? CNS, altered level of consciousness, confusion, and hallucinations will be seen in their patients. Neuromuscular problems like muscle weakness, leg, foot cramps, hyper-DTR, tetany, Twistic and Trusius signs will be positive. कार्डियोवैस्कुलर में टेकिकार्डिया होगा, हाइपरटेंशन होएगा और इसी की चीजें आना शुरू हो जाएंगी। सीआईटी के अंदर डिस्पेचिया होएगा, एनोरेक्सिया होएगा, नोजिया एंड वोमिटिंग होना शुरू हो जाएगी। माइल्ड वेयर माइल्ड होएगी तो डाइटरी रिप्लेसमेंट से ही ठीक हो जाएगी। मैग्नीशियम अगर सवेयर होएगी तो IVIM मैग्नीशियम सल्फेट देने चाहिए। और न्यूरो स्टेटस मॉनिटर करना है, कार्डिक स्टेटस को मॉनिटर करना है और पेशेंट सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नीशियम सल्फेट in peons used in peon pumps no faster than 150 mg per minute. मैक्सिमम डोज 150 mg per minute आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं। मीटर वाइटल साइंस फॉर हाइपोटेंशन एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मीटर सीरियम मैग्नीशियम लेवल क्वार्टरली एवरेज 6 hourly, cardiac monitoring calcium gluconate as an antidote for overdosage. कैल्शियम ग्लूकोनेट आपके हाथ में होना चाहिए, अगर ओवरडोज हो गई है तो दे आर यूज्ड एज एंटीडोट। हाइपरमैग्नीसीमिया, if the serum magnesium level is more than 2.5 milliequivalent per liter, that is not common. Renal dysfunction is most common cause like renal failure, Addison disease, adrenocorticoid insufficiency या untreated diabetic ketoacidosis. What do you see? Decreased neuromuscular activity, hypoactive PRs, generalized weaknesses, occasionally nausea and vomiting may be seen. What do we do? Increase fluid if renal function is normal. Look diuretics if no response to fluid. Calcium gluconate for toxicity, mechanical ventilation for respiratory depressions, and hemodialysis. मैग्नीशियम फ्री डायलिसेट यूज आपने करना है। डायलिसेट जो यूज कर रहे होते हैं डायलिसर में, डायलिसिस मशीन में, वो मैग्नीशियम फ्री होना चाहिए। These are differentiations. आप इस स्लाइड्स को 1 मिनट देखिए, उसके बाद हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। Okay, sure, beta, I will share inshallah. पढ़ लिया?
Okay, good. मैग्नीशियम हाइपोमैग्नीशिया मेन काजेस जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, लाइक माल न्यूट्रिशन हो सकती है, जीआईटी अब्जॉर्प्शन हो सकती है, माल अब्जॉर्प्शन का मतलब जीआईटी एलिमिनेशन ज़्यादा हो सकती है या इनटेक डेफिशिएंसी हो सकती है। अल्कोहलिज्म क्रोनिक अल्कोहलिज्म हो सकता है एंड रिड्यूस अब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम इन द इंटेस्टाइन। renal tubular dysfunction हो सकता है एंड सम डायूरेटिक्स एज वेल। Symptoms result from increased neuromuscular excitability and increased irritability, increased reflexes, muscle weakness, tetany and convulsions हो सकती हैं। हाइपरमैग्नीसीमिया में रेयर अकर्स होता है, mainly causes are renal failure, magnesium containing antacids. Symptoms results from depressed skeletal muscles, contraction, and nerve functions include nausea, vomiting, muscle weakness, hypotension, bradycardia, and reduced respiration. Okay, we talk about the calcium. 99% in the bones present and only 1% is in the serum and soft tissue, measured by serum calcium level. Work with phosphorus to form bones and teeth, role in cell membrane permeability, affects cardiac muscle concentration, participates in blood clotting as well.
कैल्शियम रेगुलेशन कैसे होती है? Affected by body stores of calcium and by dietary intake and vitamin D intake. Parathyroid hormone draws calcium from the bones, increasing low serum level. Parathyroid pulse. With high calcium level, calcitonin is released by the thyroid to inhibit calcium loss from the bones. Calcitonin keeps it in normal limits. Basically, पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन इसको बैलेंस कर रहे होते हैं और 99% कैल्शियम है बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती है। जब ब्लड के अंदर इसका लेवल कम होता है तो पैराथायराइड पुल स्टार्ट हो जाता है। पैराथायराइड हार्मोन बोन से कैल्शियम को ड्रा करके निकाल के ब्लड के अंदर इसके लेवल को मेंटेन करता है। जब ब्लड के अंदर नॉर्मल लेवल हो जाता है या ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो थायराइड ग्लैंड्स कैल्शियम लॉस को बोन से इनहिबिट करवा देता है। Hypocalcemia when the serum calcium level is less than 8.9 mg per dl. Ionized calcium level less than 4.5 mg per dl caused by inadequate intake हो सकता है, माल अब्जॉर्प्शन हो सकती है, पेंक्रेटाइटिस हो सकता है, थायराइड और पैराथायराइड सर्जरी हो सकती है, लूप डायरेटिक्स हो सकती है और लो मैग्नीशियम लेवल। दीज आर डिफरेंट causes of hypocalcemia. What do you see? Neuromuscular, anxiety, confusion, irritability, मसल ट्विस्टिंग, पैरेस्थीसिया, माउथ का हो सकता है, फिंगर का हो सकता है, टो हो सकता है, टेटनी हो सकता है एंड समटाइम्स फ्रैक्चर्स में आल्सो अकर्स। क्योंकि कैल्शियम बोन से निकल चुकी होगी, हाइपोकैल्सीमिया हो चुका होगा तो उसके रिजल्ट में बोन फ्रैचाइल्स होना शुरू हो जाती हैं। डायरिया हो सकता है, डिमिनिश रिस्पॉन्स टू डाइऑक्सन और ईसीजी या एक्यूजी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। इसमें व्हाट कैन वी डू? कैल्शियम ग्लूकोनेट फॉर post op thyroid or parathyroid gland. Codic metering is very important. Oral or IV calcium replacement. Other condition is hypercalcemia. Hypercalcemia when the serum calcium level is more than 10.1. 8.5 से लेके 10.5 भी है, 8.9 से लेके 10.1 mg per dl भी है। इसका जो नॉर्मल लेवल है, नॉर्मल वैल्यूज हैं वो वेरी करती हैं। 8.5 से लेके 10.5 भी मेंशन की हुई है बुक्स के अंदर। Anodized sodium, iodide calcium is more than 5.1 mg per dl. तो मेजर काजेज हो सकती हैं जिसके अंदर हाइपरकैल्सीमिया में अकर, वन इज कैंसर, अदर कंडीशन इज हाइपरपैराथायराइडिज्म। बट यू सी फटीग होएगी, कंफ्यूजन हो सकती है, लिथर्जी होएगी, कोमा होएगा, मसल वीकनेस होएगी, हाइपररिफ्लेक्सिया होएगा, ब्रेडिकार्डिया will lead to cardiac arrest in certain conditions. Anorexia, nausea, vomiting, decreased bowel sounds, constipations. Instead of that, polyuria होएगा, renal calculi होएगी और renal failure. What do we do if asymptomatic treat underlying cause? Hydrate the client to encourage diuresis. Loop diuretics, medicated and corticosteroids. Now for phosphorus. Phosphorus, the primary anion in the intracellular fluid, crucial to cell membrane integrity, muscle function and neurological functions, and metabolism of carbohydrates, fats, and proteins. Function in the ATP formation, phagocytosis, platelet function, and formation of bones and teeth. Phosphorus with the calcium is very important. और फास्फोरस और कैल्शियम एक दूसरे की होम्योस्टेसिस करवा रहे होते हैं। Hypophosphatemia when the phosphorus level is below 2.5 mg per dl.
can lead to organ system failure caused by respiratory alkalosis like hyperventilation की condition में, insulin release, malabsorption, diuretics, DKA, and elevated parathyroid hormone levels and extensive burns are the causes of hypophosphatemia. So do you see musculoskeletal muscle weakness will be seen, respiratory muscle fatigue may occur, osteomalacia and neurological fractures may occur, and CNS confusion, anxiety, seizures and coma may occur. If we go through the cardiac assessment, hypotension may be seen, decreased cardiac output as well, and hematological hemolytic anemia, easy bruising, and infection risk will be seen in the patients. What do we do? Mild and moderate conditions हैं तो dietary intervention we can और oral supplements can be given. अगर severe है तो IV replacement using potassium phosphate or sodium phosphate depending on the potassium या sodium level as well. Hyperphosphatemia, serum phosphorus is more than 4.5 mg per dl, caused by impaired kidney functions, cell damage, hypoparathyroidism, respiratory acidosis, DKA, or increased dietary intake. And the next is think about CHEMO, CHEMO. Cardiac irregularities, hyperreflexia, eating poorly, muscle weakness, or oliguria. What do we do? Low phosphorus diet, decrease absorption with antacids that binds phosphorus and treat underlying cause of respiratory acidosis or DKA. IV saline for severe hyperphosphatemia in the patients with good kidney functions may indicated. And these are major differences with signs and symptoms. You may see in the slides in 1 minute and after that we will discuss it. Okay, major causes like hypophosphatemia,
reduce absorption from the intestine associated with vitamin D deficiency and alcohol abuse, increase renal excretion with hyperparathyroidism. Symptoms included as reduced rate of metabolism, reduced transport of oxygen, and reduced white blood cell function and blood clotting. Okay, phosphorus and calcium are very important in the blood clotting mechanism. Other is hyperphosphatemia, like renal failure, tissue destruction with chemotherapy used to treat metastatic tumors. Hyperparathyroidism initially leading to elevated plasma calcium combined with reduced excretion of phosphate by the kidney. Symptoms are related to reduced plasma calcium concentration due to calcium phosphate deposits in the tissue such as lungs, kidney, and chairs. Next one is chloride. Okay, nature extracellular anion, sodium and chloride maintain water balance. Secreted in the stomach as HCl, aids carbon dioxide transportation in the blood. Hypochloremia, serum chloride level less than 96 mg per liter, caused by decreased intake or decreased absorption, metabolic alkalosis, and loop osmotic erythrocyte diuretics. What do you see? Agitation will be there, irritability, hyperactive retiars, tetany, muscle cramping, hypertonicity, shallow slow respiration, seizures, coma, and arrhythmias. What do we do? Like treat underlying cause, oral or IV replacement in the sodium chloride or potassium chloride solution. Hyperchloremia, serum chloride more than 106 milliequivalent per liter. Rare occurs alone, caused by dehydration or renal failure, respiratory alkalosis, salicylate toxicity, hyperparathyroidism, hyperaldosteronism, and hypernatremia may be the causes of hyperchloremia. What do you see? Metabolic alkalosis, decreased level of consciousness, osmosis respirations, and weakness. And hyponatremia, agitations, tachycardia, dyspnea, tachypnea, HTN, and edema will be seen. What do we do? Correcting the underlying cause, restore fluid, electrolyte, and acid-base balance, and IV lactated ringer solutions to correct the acidosis. And in our next class, we will continue with the acid-base balance. इसमें हम ADPs एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ऑन नेक्स्ट थर्सडे. ओके, मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ. अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल and study hard for you, I guess. Thank you. See you inshallah on next lecture.